Hello, Mataji, you're watching Morning Pulse on Onbill TV. Chief Election Commissioner Ganesh Kumar, along with Election Commissioners Sukhbir Singh, Sandhu and Vivek Joshi held a detailed and comprehensive review of the preparedness for the upcoming Tamil Nadu Assembly elections in Chennai on Thursday. They interacted with representatives of the recognized national and state political parties and sought their suggestions, an official release said. The Election Commission of India published the final electoral rolls for the state of Tamil Nadu following the completion of the enumeration exercise under the special intensive revision. According to the new roll, the number of voters, which was 6 crore 41 lakhs, has reduced to 5 crore 67 lakh. The revision process in Tamil Nadu was conducted from October 27, 2025 to February 23, 2026 with January 1 as the qualifying date. The electoral roll had 6 crore 41 lakh 14,587 enrolled voters as of October 27. The draft roll published on December 19, 2025 listed 5 crore 43 lakhs 76,756 electors. Tamil Nadu has 234 assembly constituency, out of which 188 are general, 44 are scheduled caste and 2 are scheduled tribe. Pure electoral rolls are bedrock of any democracy. The special intensive revision, which was carried out in Tamil Nadu from 27th October 2025 till 23rd February 2026, the simple, straight, clear, transparent objective was that no eligible voter should be excluded, while no ineligible person should be included. As on today, Tamil Nadu has 5 crore 67 lakh voters and a large number of dead voters, people who have shifted or people who had their names in more than one constituency have correctly been removed from the electoral rolls of the past. Tamil Nadu is going to go for the elections with nearly 75,000 polling stations, out of which 44,000 are rural. 100% webcasting will be there in each and every polling booth to ensure transparency. For the ease of voters, the average voter per polling station will be 756, resulting in comfortable and seamless voting. The women-managed polling stations are going to be 258, and the physically disabled managed polling stations 47, and roughly 265 model polling stations will be set up in Tamil Nadu. Tamil Nadu has a larger number of female voters, as is evident. 2 crore 89 lakhs female voters and 2 crore 77 lakh male voters. The transgenders are 7,617, and the senior citizens above 85 years of age are nearly 4 lakhs. Above 100 years also, we have 2,530 electors. The ensuing elections in Tamil Nadu will have a higher inclusive focus on the youth. There will be 3,060 dedicated assistant electoral registration officers for campaign in colleges. Tamil Nadu is going to witness more than 12.5 lakh voters, which will be between 18 to 19 years of age, and nearly 1 crore voters between 20 to 29 years of age. For the ease of voting for senior citizens and our Divyang brothers and sisters, the polling stations will be on the ground floor with proper ramps, wheelchairs with volunteers, priority in voting, a Saksham module in ECI Net app to avail these facilities at the polling station, an optional home voting facility through postal ballot.
for all electors of Tamil Nadu for their easy voting and a good experience, drinking water, toilets, signages, ramps, help desks, voter facilitation centers with sufficient light and adequate shade shall be provided in all the 75,000 polling stations. As a part of new initiatives, particularly for our electors who like to keep in touch with the world at all times, just outside the polling station, there will be a mobile deposit facility so they can deposit their mobile, enter the room, give their vote, come out and collect their mobile and go back. For a good experience for voting, the electronic voting machines will have colored photograph of the candidates and with a larger font so that the electors are able to identify easily the candidate to whom they would like to vote for. For the ease of voting, the Commission had decided. Protesting state government officials over dearness allowance issued had hit the streets, throwing traffic out of gear in the city. The protesters warned of bigger protests on March 13 across the state if the administration does not hold a meeting with them. After the rally was taken out from the Esplanade area in central Kolkata, Kolkata police had set up 3-tier barricades near the Indian Museum to stop the rally from reaching Calicut, which is the residence of the Chief Minister Mamata Banerjee. Police personnel reached the spot after teachers and workers held a rally over not receiving the DA dearness allowance after the Supreme Court's order to the West Bengal government to pay 25% of the outstanding DA arrears to its employees by March 31. Joto Mancha convener Josh Sangrami said the rally is going to begin from here. We will go to the CM's residence. We demand the Supreme Court's verdict be implemented and that compensation be provided to all workers. Now we are not allowing anyone to cross this particular area. Ma'am, any special arrangement made, ma'am, because this is Dharmatala, ma'am, it's a very busy place, ma'am. Any special arrangement made, ma'am? It's a very standard drill that we follow. If there is any procession which wants to cross over to the other flank, the southern portion of JL Nehru, this is the place where we always request them to stop. We don't allow, because you can see there's a flyover. There are a lot of important vital installations. So as of now, we have told them they can stand here if they want, but we are not going to open the barricades for them. यहाँ से रैली निकलने वाले हैं। हम लोग जाएंगे मुख्यमंत्री का जहाँ पे आवास है वहाँ तक कालीघाट की तरफ जाने का हम लोग कॉल किया है। इधर यहाँ से कर्मचारी लोग, पेंशनर्स और शिक्षक मिलके ये जुलूस निकल रहे हैं। मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो वर्डिक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए और जल्द से जल्द पूरा जो बकाया है मिटा दे कर्मचारी लोगों को। कितना संगठन मिलकर जा रहे हैं आप लोग? कितना संगठन का बात नहीं है, ऐसा कोई भी संगठन और ऐसा कोई भी महत्तर पद का कर्मचारी नहीं है जो आज जुड़ा नहीं है। यहाँ पे लेफ्टिस्ट है, यहाँ पे राइटिस्ट बीजेपी का लोगो है, यहाँ पे आरएसएस का जो संगठन है वो भी है और हम लोग जो पॉलिटिकली न्यूट्रल है वो भी है। तो पुलिस ने क्या परमिशन दी है इस रैली के लिए? देखिए, पहली बात यह है कि कोई शांतिपूर्ण ढंग से कोई मिছিল और कोई आंदोलन करने के लिए पुलिस का कोई अनुमति नहीं लगता है। हम लोग अनुमति मांगा भी नहीं था, हम लोगों ने उनको इन्फॉर्म किया था, उनको इन्फॉर्मेशन मिल गया, बस यही बहुत है। मेरा नाम है भास्कर घोष, मैं संग्रामी यौथ मंच का स्टेट कन्वीनर हूँ। The Governor of Uttarakhand, Gurmeet Singh, inaugurated the 3-day Vasant Utsav 2026 at Lok Bhavan today. He said the Spring Festival reflects the spirit of celebration and highlighted that floriculture can significantly boost the state's income. Praising the aroma fragrance revolution policy, he noted that Uttarakhand, blessed with natural resources, has the potential to supply fragrances to the global market. The Governor also appreciated the Agriculture and Horticulture Department for research on the health benefits of flowers and aroma. He added that cultural performances will be held during the festival and encourage people to reconnect with nature and heritage over the 3-day event. सबसे पहले आपको सबको जय हिंद। आपको देखकर इतनी खुशी हो रही है क्योंकि आपके अंदर में एक अलग उत्साह है, एक अलग हर्ष है। आज सचमुच एक मेले का, एक उत्सव का, एक सेलिब्रेशन की फीलिंग हो रही है। मुझे अत्यंत खुशी है कि लोक भवन के प्रांगण के अंदर में 3 दिवसीय स्प्रिंग फेस्टिवल वसंत उत्सव का
हमने शुरू कर दिया है, श्री गणेश किया है, शुभारंभ किया है और जो एक्साइटमेंट है उसको देखकर हृदय बहुत प्रसन्न हो रहा है। सबसे सुंदर बात उत्तराखंड की है कि हम पार्टिसिपेट करते हैं, योगदान देते हैं। आज जो हमने फूलों की क्वालिटीज को देखा है, ऐसा लगता है कि प्रभु का हमारे फूलों के ऊपर में खास एक आशीर्वाद है। उन फूलों की सुंदरता, उनका साइज, उनके अंदर में जो सुगंध है वो अपने आप से अलग है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई कि हर किसान ने, हर प्रोग्रेसिव किसान ने जो बागवानी में बिलीव करते हैं, जो उनके अंदर पैशन है, लगन है, उन्होंने यहाँ पर अपने फूल को डिस्प्ले किया है और उन्होंने सबके साथ में साझा किया है कि इतने सुंदर फूल हैं। मुझे तो ऐसा लगता है हमारे फूल ही एक अर्थव्यवस्था में, हमारे पैशन में, हमारे पर्स में, हमारे इनकम में एक बहुत बड़ा इजाफा कर सकते हैं। दूसरा, मुझे अत्यंत खुशी हुई कि हमने अरोमा की एक महक क्रांति को जन्म दिया है। जब मैं देखता हूं कि जो प्राकृतिक आशीर्वाद हम सबके उत्तराखंड के ऊपर में है और जो हम परफ्यूम्स बना सकते हैं वो पूरे विश्व को दे सकते हैं। हमने जो पहले तिमरू का सेंट बनाया था वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया है। उसी प्रकार हर एक चीज का जो अरोमा है वो अपने आप से बिल्कुल अलग है, चाहे वो लेवेंडर है, लेमन है। और आज सबसे सुंदर बात क्या लगी कि इन सब का हमारी सेहत के ऊपर में, हमारे रियलाइजेशन के ऊपर में, हमारे रहन सहन के ऊपर में क्या असर होता है, वो एक प्रदर्शनी लगाई है। और मैं एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट को दाद देता हूं कि उन्होंने बहुत रिसर्च की है कि इन फूलों का, हार्टिकल्चर का हमारे स्वास्थ्य के ऊपर में क्या असर होता है। इसका बहुत ही सुंदर कार्य किया है, शोध किया है। आई वुड रिकमेंड कि आप सब आके देखिए कि किस प्रकार फूल, अरोमा हमारे सेहत के अंदर में, स्वास्थ्य के अंदर में कर सकते हैं। और आज एक बहुत टचिंग बात थी कि हमारे पूरे परिवार ने भोजपत्र के ऊपर में पोस्टल कवर किया है। Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deosai has said that the state's rehabilitation policy for Maoists is yielding positive results. He stated that soon after assuming office, the government appealed to Maoists to renounce violence and join the mainstream. As a result, over 2,500 Maoists have surrendered to the FAR. So far, the Chief Minister added that 120 surrendered Maoists visited the state assembly and watched the proceedings, expressing happiness at becoming part of the development process. He assured that the government will take full responsibility for the rehabilitation and future. पुनर्वासित नीति है, बहुत अच्छी है और सरकार में आते के साथ हम लोगों का आह्वान था माओवादियों से कि वो हिंसा को छोड़ें, गोली बारूद की भाषा को छोड़ें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। उनके साथ सरकार न्याय करेगी और बहुत अच्छा पुनर्वास नीति लाए और इसका परिणाम भी मिला कि आज 2,500 से ज्यादा माओवाद आत्मसमर्पित हुए हैं और आज 120 माओवादी जो आत्मसमर्पित हैं वो विधानसभा भवन आए हैं, विधानसभा की कार्यवाही भी देखे हैं। अभी हम सभी लोगों से उनकी मुलाकात भी हुई है, हमारे मंत्रीगण से, हमारे गृह मंत्री जी से, हमारे अधिकारियों के साथ, उनके साथ फोटोग्राफी भी हुई है। हमने उनसे बात भी की है। बहुत खुश दिख रहे हैं वो लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ के और आगे सरकार उनके भविष्य की चिंता करेगी। सर, आपने कहा विकास की मुख्य धारा से जुड़ के काफी खुश हैं, तो कुछ अपील करना चाहेंगे सर जो बचे हैं उनके लिए? जी बिल्कुल, वो तो लगातार अपील कर रहे हैं और 31 मार्च तक का समय है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का डेडलाइन है। अगर तब तक नहीं आएंगे तो फिर उनके हिसाब से ही उनसे निपटा जाएगा। जंगलों से छोड़कर आज लोकतंत्र के आज मंदिर में आ जाए हैं, आज कैसा अनुभूति करते हैं? लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। आज हिंसा और गोलीबारी को छोड़ के आज देश के संविधान पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है, विकास की मुख्यधारा से जुड़े हैं। उनका बहुत स्वागत है और ये बहुत
During the Haryana Legislative Assembly session, Chief Minister Nayab Singh Saini highlighted the state's agriculture production figures. He stated that in 2023 and 24, farmers produced 58,094 lakh metric tons of crops, while in 2025, the production stood at 53,098 lakh metric tons. The Chief Minister also informed that the government has launched a dedicated portal enabling farmers to track the produce right from their homes to the point where the gate pass is issued, ensuring greater transparency and efficiency in the system. मैं आपको ये बता रहा हूं 2021-22 मेरे किसान ने जो पैदावार किया कितना किया 54,72,000 मीट्रिक टन। ये है 2021-22 और 22-23 माननीय अध्यक्ष जी हमारे किसान ने जो पैदावार की है वो की है 59,21,000 मीट्रिक टन। 23-24 में हमारे किसान ने जो पैदावार की है वो की है 58,094 लाख मीट्रिक टन और 24-25 में ये की है 53,098 लाख मीट्रिक टन। और ये है पीआर धान, मोटा धान। और जो नॉन बासमती जो बासमती है वो 2021-22 में की है 34,023 लाख मीट्रिक टन और 22-23 में जो उत्पादन किया है बासमती का वो 35,36,00,000 लाख मीट्रिक टन और जो 23-24 में बासमती पैदा किया है वो किया है 42,55,000 मीट्रिक टन और जो 24-25 में हुआ है वो 44,84,000 मीट्रिक टन। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इसके अंदर आप ध्यान करिए अब की बार 25-26 में जो पीआर धान है माननीय अध्यक्ष जी वो 62,13,000 मीट्रिक टन ये मैंने पिछले आंकड़े दिए और जो बासमती है बासमती ये 38,41,000 मीट्रिक टन। इसके अंदर अंतर देख लीजिए क्योंकि हमारे किसान ने जो पैदावार की है परंतु हमने एक सिस्टम भी बनाया है माननीय अध्यक्ष जी हमने पोर्टल बनाया है किसान को उसके घर से जहां खेत से गेट पास कटता है कह रहे गेट पास के अंदर अगर खामी हुई है किसी ने खामी की है हमने उसके खिलाफ कार्रवाई भी की है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हुई है और काफी संख्या के अंदर हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है जो इसके अंदर गलत हमें मिले हैं। और माननीय अध्यक्ष जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि धान की खरीद ये सरकारी एजेंसी के माध्यम से भारत सरकार निर्धारित करती है। भारत सरकार Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah has described SATTE as a key platform for promoting Jammu and Kashmir tourism. He said that the event provides opportunities to connect with tourism stakeholders and adopt best practices for across the industry. Expressing optimism, he added that with the new season beginning, tourist booking and footfall are expected to rise. The Chief Minister said that the government focus is on enhancing visitors. SATTE is a very important B2B and B2C event for J&K tourism. It affords us two opportunities. One, we're able to establish contacts with a lot of people involved in tourism promotion, and we're also able to see what others are doing in terms of following some best practices. This year, SATTE has been good, and we hope that the bookings and the tourist flow into Jammu and Kashmir will increase now that the season is starting. So what are the latest challenge that you see in the JK tourism? For us, the biggest challenge is to ensure that the tourists get a satisfactory experience. We want tourists to go back happy.
We want them to go back feeling that they have been valued. And for that, we need to constantly improve the experience. We need to improve our destinations. We need to improve the cleanliness of our destinations. We need to improve the facilities. And then we need to add new destinations. Jammu and Kashmir tourism is not seasonal. It's 12 months a year. So whether you're talking about yatris to Mata Vaishno Devi, whether you're talking about border tourism visits, or whether you're talking about tourism in Kashmir, whether Gulmarg, Pahalgam, Srinagar, Yusmarg, Sonmarg, Gurez, all the areas, we are constantly working to improve our product, and that's why we are at events like SATE. Sir, yesterday you were talking about the development of new destinations, 9 destinations. Tell me something about that. I don't want to get into too many details right now because, as the Honourable Union Minister also mentioned, this is something we're working at together with Government of India. But the idea is to develop 9 new world-class destinations within Jammu and Kashmir so that we can give people more choice. And I think the name of the game now is sustainability. Whatever tourism happens has to be sustainable. I think again, one of the things that we are constantly talking about is how to go up the value chain. Instead of volume-based tourism, you want value-based tourism. You want more high-spending tourists. For that, you need to provide them with a product that makes Jammu and Kashmir attractive. And that is what these 9 new destinations are about. So how to attract a large number of international travelers? Look, honestly, I'll tell you, I'm not a great one for chasing after international travelers. The Indian traveler today is sought the world over. Look at how many foreign countries are participating here. How many foreign companies are here. Because they want the Indian tourist. I'm not interested in the foreign tourist. If I get a good size of the Indian tourist, they spend far more money than some of the foreign tourists. So for me, it's more important that we market Jammu and Kashmir to the rest of India. The world can take care of itself. Now the last connectivity has largely improved, even the Srinagar getting connected with the railway. So how do you think helping? Well, that's been a good thing. We want that the capacity in the train goes up because at the moment, were you to travel to Srinagar, you wouldn't be able to buy a ticket suddenly. You'd have to book months in advance. So I'm hoping that Ministry of Railways, Government of India, will increase the carrying capacity of this train, increase the frequency of the train, and that will allow it to become even more important in terms of its role in our tourism promotion. Anything about air connectivity, sir? Well, we have a new airport now sanctioned by Government of India. Work will start on that. That will increase our capacity. Work is going on a new terminal building in Jammu also. So yes, with these two being completed, air connectivity will also improve. Okay. Last word about the SATE, sir. Last word about That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.